Hello students, today in this video I am going to discuss with you the concept of correlation of class 11th of statistics book. So let's get started. Students, correlation means the association between two variable, or it shows the relationship between two variable. Whenever some definite connection exists in between two or more groups or classes or series, there is said to be correlation. So for example, we are taking the example of increase in the level of employments result in increase in output. So only those relationship are to be treated as correlation which offer some meaningful conclusion. For example, increase in rainfall and increase in the rice production is a relationship that makes sense. So we have to say correlation shows the association between two variables. So we have to write down it shows association between two variables. So only those relationship are to be treated as correlation which offer some meaningful conclusions. So for example, we have already discussed here the increase in the level of employment leads to result in increase in the output. So now we have to discuss the different types of correlation. So we have to write down here types of correlation. So we have to start from the types of correlation. First type is positive correlation and negative correlation. First one is the positive correlation and negative correlation. Basically, these positive and negative correlation is the most important types of this correlation. So second one is the linear correlation and non-linear correlation. And third type is the simple correlation and multiple correlation. So students, when we have talked about the different types of correlation shows the association between two variables. Then we have talked about the types. There are basically 6 main types of correlation. First one is the positive correlation, second is the negative correlation, third one is the linear correlation, another one is the non-linear correlation, this one is the simple correlation, and last one is the multiple correlation. Now we have to explain these types of correlation one by one. So let's get started. So we have to start from the positive correlation. So we have to write down here first type, that is the positive correlation. Students, positive correlation means when two variables move in the same direction. It means when one increase, another will also increase, is said to be positive correlation. So it shows the positive relationship between two variables. Let's take example. For example, we are taking price of X commodity and quantity supply. For example, price is 10, quantity is 20, 30, 40 and 50. Now we are also taking here the quantity supply. When the price increase, quantity supply is also increased. For example, 100, 200, 300, 400 and last one is the 500. What it show? It shows when the price, जैसे price of the commodity increase होता जाएगा, quantity supply is also increase. When price is 10, quantity is 100. When price increase from 10 to 20, quantity supply is increase from 100 to 200. Similarly, when price increase from 20 to 30, quantity supply increase from 200 to 300. When 30 to 40, 300 to 400. When price increases 40 to 50, quantity supply is also increases 400 to 500. What it show? It shows the
positive relationship. Now we have to convert this tabular presentation into diagrammatical portion. So we are taking here y-axis. Here we take out the x-axis. This is the point of origin. So write down here price. Here we take out the quantity supply. Take out 10, 20, 30, 40 and this one is the 50. साथ में we are taking here x-axis on quantity supplies, that is 100, 200, 300, 400 and last one is the 500. Now we have to take the points here. So when the price is 10, उस टाइम quantity कितनी 100, तो we take out the price 10 and quantity is 100, so we are wrote here point. Next is 20, 200, 20 and this one is the 200. 30, 300, 30 and this one is the 300. 40 and last one is 400. 500 with 50 price. This one is the point. Clear? Now we have to join these points. What it shows? It shows this this curve is upward sloping, which shows a relationship between price and quantity supply. So SS is the supply curve. So supply curve shows a relationship between two variable have positive. कैसे? Because जैसे जैसे price बढ़ता गया, quantity supply is also increase. So when we have to convert this tabular presentation into diagrammatical portion, it shows upward sloping curve, which shows the supply curve. So supply curve is always positive, shows the positive relationship between price of the commodity and quantity supply. When price increase, it leads to increase the quantity supply. Clear? This concept is called positive correlation. Now we have to start the second relationship, that is the negative correlation. Second is the negative correlation. So student, negative correlation is the opposite of positive correlation. Negative correlation means when two variables change in different directions. For example, when one increase, another will be decrease. It shows the negative correlation. So we are taking here the example of, for example, price and quantity demand. When there will be increase the price of the commodity, it leads to decrease the demand of the commodity. So we are taking here example. For example, we are taking price of X commodity. Here we take out quantity demand of X commodity. So price is when 10, 20, 30, 40 and 50. At that time quantity demand is decrease. When price increase, quantity demand will decrease because of inverse relationship between price of the commodity and quantity demand. So when price is 10, quantity demand is 50. When price is 20, quantity demand is 40. 30, 30, 20 and this one is the 10. So this tabular representation shows there is negative or inverse relationship between price of the commodity and quantity demand. Whenever there will be increase in the price of the commodity, quantity demand will decrease. So देखिए यहाँ पे इस diagrammatical presentation इस tabular presentation में we have to see when the price increase 10 to 20, quantity demand decrease 50 to 40. When it increase 20 to 30, 40 to 30, it will decrease. When price increase 30 to 40, quantity demand decrease 30 to 20. Similarly, when price increase 40 to 50, quantity demand decrease 20 to 10. So it shows the inverse relationship between price of the commodity and quantity demand. When price increase, it leads to decrease the quantity demand. So student, it shows the inverse relationship between price of the commodity and quantity demand. So now we have to convert this tabular presentation into diagram. Again, we are taking y-axis. Here we take out x-axis. So write down here the price of the commodity. This one is the quantity demand. So price is 10, 20, 30, 40 and last one is the 50. Similarly, quantity demand is 10, 20, 30, 40 and last one is the
50. When the price is 10, उस टाइम आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इट इज़ द 50. Whenever the price is 20, quantity demand is 40. Yes. Whenever price is 30, quantity demand again 30. This one is the basically equilibrium point. Whenever price is 40, then quantity demand is 20. This one. And when the price is 10, quantity demand is, sorry, when the price is 50, quantity demand is 10. Clear? So now we have to join these points with the help of basically scale. So basically we are not taking here the graph paper, that is why the point is scattered here. So with the help of these schedule, जो आपका डायग्राम बनेगा, जो डिमांड कर्व बनेगा, that is the downward sloping curve. So write down here DD is the demand curve which shows inverse relationship between price of the commodity and quantity demand. Whenever price increase, quantity demand will decrease. That is the inverse relationship. Clear? This one is the second type of negative correlation. Clear? Now we have to start the third type. So students, third type is linear correlation. Linear correlation. Student, linear correlation means when there will be when the changes in variable in constant proportion. It means when two variable change in constant proportion is known as correlation, linear correlation. इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल में चेंजेस तो आएगा, लेकिन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंजेस आएगा. जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वेरिएबल में चेंजेस आएगा, वो कहलाएगा आपका लिनियर कोरिलेशन. तो लिनियर कोरिलेशन मीन्स दोज कोरिलेशन इन विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट या फिर ऑन इक्वल बेसिस पे उसमें वेरिएबल में चेंजेस आएगा. So we have to say, we are taking the example, for example X commodity and we are taking here a Y commodity. For example X is the 2, Y1 is the 4, 6, 8, 10 and Y variable is for example 10, 5, 10, 15, 20 and 25. Look here all of you students, what it shows that there is association between two variable. यहाँ पे क्या है, लीनियर कोरिलेशन की अगर वर्डिंग हम देखें, दोनों x एंड y वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहा है दैट इज ऑन कांस्टेंट बेसिस. कांस्टेंट बेसिस में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है. किस तरह इक्वल प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है? x वेरिएबल में अगर हम देखें 2, 4, 6, 8, 10, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज एवरी वेरिएबल इज द 2. इनके बीच में 2 का वेरिएबल है, 4 एंड 6 इज ऑल्सो 2, 6 एंड 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंसेस है, 8 और 10 के बीच में 2 डिफरेंस. तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आ रहा है यानी कि जो डिफरेंसेस दैट इज इक्वल फॉर ऑल, दैट इज 2 यूनिट्स. तो सिमिलरली y वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, इनमें जो डिफरेंसेस है 5 और 10 में दैट इज द 5, 10 और 15 में भी 5, 5, 5, 20 और 25 में भी 5. तो व्हाट इट शो? इट शोज x वेरिएबल की चाहे हम बात करें चाहे हम y वेरिएबल को डिस्कस करें, दोनों वेरिएबल में जो चेंजेस आएगा इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं सब में जो चेंजेस आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है यूनिट्स के अकॉर्डिंग दैट इज द 2. तो इस y वेरिएबल में भी जो चेंजेस आ रहा है वो कितना है? दैट इज द सेम सब वेरिएबल में है, वो कितना है? 5 का डिफरेंसेस है. तो यहाँ पे x और y वेरिएबल में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है. इस कंसेप्ट को वी हैव टू सेट लीनियर कोरिलेशन. क्लियर? नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फोर्थ टाइप, non-linear correlation. So we have to write down the fourth type. Fourth is non-linear correlation. So student, non-linear correlation is the opposite of linear correlation. अगर linear correlation में वेरिएबल में जो constant changes आ रहा है, constant रेशियो में चेंजेस या इक्वल प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा था, तो नॉन लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन व्हेनेवर देयर विल बी चेंजेस
डू नॉट चेंज इक्वल प्रोपोर्शन, जहाँ पे वेरिएबल में जो चेंजेस आएगा दैट इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ इक्वल, इट्स नॉट इक्वल प्रोपोर्शन, चेंजेस not on the behalf of equal proportions. So for example we are taking the a variable or x, here we take the b variable या फिर y variable. Clear? For example we are taking the example of 2, 4, 6, 8, 10. Similarly b variable shows 3, 7, 12, 18 and 25. सो स्टूडेंट्स, इस ए वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसमें देखें देयर इज अ बेसिकली नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. वाई? बिकॉज 2 and 4 में तो इक्वल क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, 2 2 2, इनमें जो इन वेरिएबल इस ए वेरिएबल के जो अगर देखें इसमें 2 यूनिट्स में चेंजेस आ रहा है, हर वेरिएबल के अंदर 2 यूनिट्स में यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहा है, डिफरेंसेस है 2, 4, 6, 8 एंड 10 में. लेकिन अगर हम बी वेरिएबल की बात करते हैं या फिर वाई वेरिएबल को हम डिस्कस करते हैं, इनका जो चेंजेस है दैट इज द एंटायरली डिफरेंट. इनमें जो चेंजेस आ रहा है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल 3 and 7 का अगर हम बात करते हैं तो इनके डिफरेंसेस कितना है, 4. सिमिलरली 7 and 12 में कितना डिफरेंसेस है, 5. 12 and 18 में 6. 18 and 25 में 7. तो व्हाट इट शोज, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इनकी जो डिफरेंसेस दैट इज 2 यूनिट्स का चेंजेस आ रहा है हर वेरिएबल में. लेकिन इस वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं वाई वेरिएबल में, इसमें जो डिफरेंसेस आ रहा है 4, 5, 6, 7 दैट इज एंटायरली डिफरेंट. इट मीन्स हेयर द 2 वेरिएबल x एंड y में जो चेंजेस आएगा दैट इज नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन, नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर कोरिलेशन भी किस तरह का कंसेप्ट है, लीनियर कोरिलेशन, जहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है बट नॉन लीनियर कोरिलेशन में जो डिफरेंसेस आ रहा है वो क्या है, दैट इज नॉट इक्वल प्रोपोर्शन. क्लियर? तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फिफ्थ कंसेप्ट या फिफ्थ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, दैट इज सिंपल कोरिलेशन. सो fifth type is simple correlation. Simple correlation, what simple correlation shows? Simple correlation implies the study of the relationship between two variables only. It shows the studies of relationship between only two variable. ये simple correlation क्या show कर रहा है, जो relationship, एक meaningful relationship between only दो variable के बीच में किसी तरह का चाहे positive relation हो चाहे वो negative relation हो. For example मैं example लेती हूँ price and quantity demand. अब प्राइस और जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करें हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. ऑल ऑफ यू नो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर इन प्रीवियस टाइप्स. सो इनवर्स रिलेशनशिप ये क्या शो कर रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, बट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई शोज द पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप. सो व्हेन द प्राइस इंक्रीज, quantity demand decrease, it shows inverse relation. When price increase, quantity supply is also increase, it shows the positive correlation, a positive relation. तो simple correlation का क्या मतलब है कि हम जब स्टडी करेंगे रिलेशनशिप किसी भी दो वेरिएबल का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन. क्लियर? सेकेंड कंसेप्ट इज द नाउ लास्ट टाइप इज द मल्टीपल कोरिलेशन. Multiple correlation. Student, multiple correlation means when the relationship among three or more than three variable is studied simultaneously, it is called multiple correlation. इसका क्या मतलब है, जब हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ रेनफॉल का. जैसे मैंने रेनफॉल का एग्जाम्पल लिया कि रेनफॉल, मैन्योर एंड वाटर एटसेट्रा ऑन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी. तो ये क्या शो कर रहा है, इट शोज अ रिलेशनशिप बता रहा है कि रेनफॉल से, फर्टिलाइजर से और वाटर का पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है. तो इट शोज अ मल्टीपल कोरिलेशन, यानी कि यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप शो करें दैट इज मोर देन थ्री,
multiple correlation shows a relationship among 3 or more than 3 variable. So these are the today we have discussed the concept of correlation and its types. So student, thank you so much, and I hope you have to understand the concept of correlation and its type.